So is it clear, okay, bhai, till here? Sorry. Yes, well, bye. Clear. Well, I had one question just before everybody joins. So this when we talk about internal load balancers, they're not exposed to the public IP, right? No, They we're coming only. to that. Yes, we're coming to that, Kumail. वो इंटरनल लोड बैलेंसर एक्सप्लेन करने के लिए तो हम लोगों ने इतना बड़ा एग्जांपल लिया है. That will be Okay. answered, don't worry. Okay, so now let's say you have one machine here and one machine here and 4 machines here. And there's some sort of connectivity also. Okay. Now, okay, would you call this as an highly available infrastructure? Would you do that? Will you call this as HA or highly available infrastructure or application? No. And why not? I mean, at the backend, there's only a backend database. There's only one server. Yes. Wherever you see a single point of failure, right? Wherever you see a single point of failure, I'm just taking a random IP, guys. Wherever you see a single point of failure, it cannot be called highly available application. I hope that is clear to all of you. So in this case, we have a single point of failure. ठीक है, आपके फ्रंट एंड में तो 4 सर्वर है, आपने लोड बैलेंसर भी लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ से पब्लिक जो है इस आईपी को या इस यूआरएल को यूज कर रही है, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड हो रहा है. बट ये 4 सर्वर मिलके क्या फंक्शनैलिटी दे रहे हैं आपको? What are you able to do with these 4 servers? Access the application only. Yeah, the front web page. Yes, access maximum ऑप्शन सेलेक्ट कर लो कि भाई ये पिक्चर है. आई मीन विद रिगार्ड टू दिस फेस ऐप जो हमने फंक्शनैलिटी डिस्कस की कि मुझको यंगर वर्जन चाहिए, ये चाहिए. बट उसके बाद ये अगर सर्वर डाउन होता है, सो डज इट मेक एनी सेंस? मेरा एप्लीकेशन अप है क्या? मुझको रिजल्ट आएगा ही नहीं बिकॉज मेरा बैकएंड सर्वर ही डाउन है. आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भी जो है आपको ये करना पड़ेगा, हाईली अवेलेबल बनाना पड़ेगा. What is the point? What is the method to make it highly available? You'll have to deploy more machines. Now, if you deploy more machines here, we are again back to square one. जो क्वेश्चन हमारा इनिशियली था, जो डे 1 पे मैं पूछ रहा था कल आप लोगों से, ये 4 मशीन है यहाँ पर, तो देन किसका आईपी यूज होगा? विच मशीन टू बी यूज? हाउ वुड यू नो कि कौन सा मशीन डाउन है? सपोज ठीक है आपने 4 तो बना दिए, अब आपके फ्रंट एंड मशीन्स को कैसे पता होगा कि इनमें से कौन सा डाउन है, किस पर रिक्वेस्ट नहीं जाना चाहिए? आपने 4 बना दिए और सपोज ये इसमें से डाउन है, बट इन मशीन्स को ये पता ही नहीं है कि कौन सा डाउन है, तो ये सारे रिक्वेस्ट यहाँ से कलेक्ट करके उस डाउन मशीन पर ही भेज रहे हैं. विल यू गेट अ रिप्लाई एवर इस मशीन से इफ दिस मशीन इज डाउन और आपकी सारी मशीन्स जो है रिक्वेस्ट इसी को भेज रही है? No. No, right? Hence you will require a load balancer here also. Similarly, जिस तरह से आपने वहां पे लोड बैलेंसर का काम किया था, you will require a load balancer here. ये जो लोड बैलेंसर हमने वहां पर ये किया है, सेम लोड बैलेंसर आप लोगों को चाहिए होगा इस वाले यहाँ पर भी. okay? इसका प्लेसमेंट सही से नहीं हो रहा है, बट आई होप यू गॉट इट. let me drag it if I can. Here it is. So is it clear, guys? Now tell me one thing. Would you require a public IP here? कोई पब्लिक आईपी की जरूरत है क्या यहाँ पर? No. No. And why not? Why don't we require a public IP? Because all this front end, back end, and database servers, they are communicating internally, probably into same virtual network. Exactly. Not probably. They have to be in same network. Otherwise, they won't be able to talk to each other. So they are obviously connected in one virtual network. Maybe one subnet, could be different subnets also. And even if those are in different virtual networks, the VNet peering is there.
some sort of connectivity is definitely there. Hence, we do not require any different IP. Thus, this becomes your internal public, this becomes your internal load balancer, and this is your external load balancer. Okay. Is it clear? Yeah. Got it. Yes, Kumel, you had some question? No, I'm just saying that even if in an interview they ask us and we just say that, okay, internal load balance is only exposed internally, whereas a public load balance is, of course, exposed to the public domain, the internet facing it is. Right. That's the global one, right? Yes. So that's how, if we explain that also, it's a correct answer, right? Yes, yes, it is. Yeah, because when I gave it was a different answer, so that's why I was thinking, okay, that's answer also right, so is this one also? एंड सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पर भी लगेगा बाय द वे, ठीक है, सिर्फ ये दो से भी काम नहीं चलेगा. लेट्स से आपने यहाँ दो बना लिया और इधर एक ही सर्वर है, ये डाउन होता है तो भी आपका एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल नहीं है, इट इज स्टिल नॉट हाईली अवेलेबल. सो अनटिल एंड अनलेस यू मेक श्योर कि हर चीज जो है आपकी हाईली अवेलेबल है, यू कैन नॉट कॉल दैट particular application is highly available application. You cannot do that. Clear, everyone? So you will require multiple machines here and you will require one more load balancer here. So यहाँ से इसकी connectivity होगी, यहाँ से इसकी connectivity होगी. Anyone who has a doubt, did not understand anything? Yes, okay, bhai, is it clear, Yogesh? Yes, Ulva. Understood. Yes. Okay, so now let's move. Our machine is ready. You guys checked that now we have 3 servers. One of them has this website, right? And 2 of them has this website. Okay, now let's go to the portal and start working on our load balancer. So I'm going ahead with the standard load balancer. This time we'll see the public one first. Has to be regional. Global का फिलहाल कोई scope नहीं है. Next, a public load balancer cannot be created without a front-end IP configuration. See, front-end IP has to be there. I cannot click on next. At least one front-end IP needs to be there. So I'm adding a front-end IP here. Whenever it comes to a public IP, you cannot literally select a public IP. Okay, you will have to just name it. They will give you a public IP. Or if you have some public IPs already in your environment, you can use one of them. If you see, I have 4 public IPs. One is this one, second one is this, third one is this, fourth one is this. But can I associate these public IP? Any one of these? Can I associate this one with my load balancer? If they are in use, then no. Irrespective they are used or not, forget it. It's clearly here mentioned that cannot Okay, yeah, be cannot be. associated and can be associated here. तो कोई free होता तो यहाँ पर दिख ही जाता आप लोगों को. Okay. So I'm creating a new public IP. Here you do not have an option. If my load balancer is basic, my public IP will be basic. If my load balancer is standard, my public IP will be standard. Now, what is the difference between standard and basic public IP? You don't need to know that. If you want to know, go ahead and read it. No doubt in that. But इतना detail में कोई पूछने नहीं वाला है. Public IP में भी basic होता है और standard होता है. उसमें क्या difference होता है? That's okay. You don't need to know it. As of now, we are not selecting any zone. Click OK. Gateway, we are not dealing with it. I can have, it's not compulsory to have only one public IP. I can have 2 of them, front-end IP. I will create 2 and I'll explain it to you later कि 2 किस तरह से काम में आ सकते हैं. Okay, so guys, we started creating a load balancer. We discussed these options. ये क्या है, differences देखा. We came here, public IP, front-end IP, which is a must thing. We created 2. Now backend pool. I explained it to you. What is the backend pool?
This is your backend pool. So backend pool will have to add it from here. I'll have to give a name and I'll have to select a virtual network. I hope I didn't create a new virtual network for them. Otherwise I'll have to create one more machine. Okay, but backend pool is not a mandatory thing to create here. We can do that later. तो इस backend pool को मैं आपको load balancer के पेज से बताऊंगा. The next thing is inbound rules. Inbound rules you can add here. What are the rules? यहाँ पर नाम दे सकते हो आप, फ्रंट एंड आईपी सेलेक्ट कर सकते हो, बैक एंड पूल सेलेक्ट कर सकते हो, ये सब. बट दिस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड अगेन फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. वहीं से हम करेंगे, ज्यादा ऑप्शंस दिखते हैं. आउटबाउंड रूल्स सिमिलर थिंग. टैगिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. रिव्यू एंड क्रिएट. ओके, और आपको सी दिस इज हाउ अ जेसन फॉर्मेट और अ टेम्पलेट लुक्स लाइक. अगर आपको कोई पूछता भी नहीं, हैव यू वर्कड विद अ जेसन और टेम्पलेट फॉर्मेट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आपको कुछ नहीं, इसी तरह के टेम्पलेट मिलते हैं. आपको चीजें चेंज करनी होती है उसमें, कुछ चीजें चेंज, जिस तरह से नाम, लोकेशन, लोड बैलेंसर, इस तरह से कोई चीजें चेंज करनी होती है. एक फॉर एग्जांपल T-Soft load balancer public IP. Do you see? If I want to create another one, I'll simply come here and change this name and copy and paste this one. That's all I'll have to do. That's all. उतना ही मुझको करना होगा. So this is what a template is. You can download a template from here, edit that template and create new. But as of now, we are not dealing with templates. So we're creating a load balancer. While this is being deployed, if you have any questions, please let me know. सर एक क्वेश्चन आ रहा है. हेलो, ये बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है कि ना फ्रंट एंड पे ना पब्लिक आईपी होगा, क्योंकि वो कोई भी ओवर द इंटरनेट उसको करेगा. और बैकएंड में क्योंकि सारे सर्वर्स एक ही आईपी पे होना चाहिए, तो वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेट आईपी से. मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये यूजर मतलब Azure इन्वायरमेंट में या कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये सेम एज इट इज रहेगा क्या? जैसे मान लीजिए फेस टाइम का एग्जांपल नहीं देते आप, ये कोई मतलब कोई एप्लीकेशन होती डेवलपमेंट की या कुछ और, या सिट्रिक्स की कुछ एप्लीकेशन होती, तो भी ऐसी रहता क्या कि वो बंदा सिर्फ है ना इंटरनेट पे जाता और If your application is accessible over the internet, you will use the external one. या तो पहले से internal use करो. आपको पता है कि आपका subscriber base भी जो है, if you know that your users here, these are not from the internet, और ये user भी जो है आपके, ये भी कोई इसी IP रेंज से आने वाले हैं जहां पे आपके सर्वर्स है. ठीक है, इसी रेंज से आपके IP एड्रेस भी, आपके यूजर्स भी, then you will not require a public IP. Then you don't use an external one. आप यहीं से internal से शुरू कर लो. That depends on the nature of the application, be it your internal application or external. एग्जाम्पल के लिए आपका PeopleSoft है, या जो आपका लीव अप्लाई करने वाला जो कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन हो. इफ योर कंपनी वांट्स कि वो सिर्फ एक्सेसिबल हो आपके ही नेटवर्क से, जब आप कनेक्टेड हो VPN वगैरह पे with a private IP, then they will not require a public IP. बट फॉर द सेम एप्लीकेशन, अगर आपका कंपनी चाहता है कि यार ठीक है, तो बहुत बेसिक है, पे स्लिप डाउनलोड करने वाला ऑप्शन है, सो मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हो कि मेरा एम्प्लॉय सिर्फ लैपटॉप पे ही लॉगिन हो, वो मोबाइल से भी कर ले तो भी आई डोंट माइंड. दैट टाइम यू विल रिक्वायर पब्लिक आईपी. जैसे मैं वी सेंटर या दूसरे का, जैसे हमारे क्लाइंट का कैसा है कि उसने या तो लैपटॉप दे रखे, लैपटॉप पे वो VPN कनेक्ट करके कंपनी नेटवर्क में आ जाते हैं,
और दूसरा एक है कि वो सिट्रिक्स VDI से के थ्रू ऑफिस नेटवर्क में आ जाते हैं। तो मतलब ये मैं रिलेट कर सकता हूँ यहाँ पर कि ये बैकएंड में कोई एप्लीकेशन होगा यूजर्स का, और ये मतलब डिपेंड लाइक क्योंकि मैं ये थोड़ा अजूर में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो एंड यूजर कैसा होगा, मतलब वो ऑफिस नेटवर्क में होगा, ओवर द इंटरनेट होगा, कहाँ होगा। It's up to the application owner. If application owner says कि मेरे users बाहर network में है, then you will require a load balancer, an external load balancer. If an application owner says कि मेरे spectators जो या मेरे users है, those are only within the network, then you will not require a public IP. ठीक है सर। ठीक है, वैसे भी see now you are just joining directly from this class. इसके पहले भी हम जितना डिटेल डिस्कशन करते आए हैं ना, वीनेट वगैरह, देन हम लोगों ने VPN कनेक्टिविटी वगैरह देखी। आई एम श्योर वंस यू गो थ्रू दोज लेक्चर्स, या जब हम करेंगे उसको फिर से नेक्स्ट बैच में, when we do that time you will understand. Now you are not getting it because you have not covered those sessions जहाँ पे हमने VPN को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एक अगर बाहर का IP है, वो इस IP से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो what are the options. Once you get that concept, this will be easier for you to understand. Okay guys, so the load balancer is ready here. This is my load balancer. यहाँ पर बेसिक डिटेल्स दे रहा है, यहाँ पर नेटिंग रूल्स वगैरह क्या है, रीजनल है, ग्लोबल है, किस तरह से है। बैकएंड पूल की इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई बैकएंड पूल इसमें ये किया ही नहीं है, अटैच नहीं किया है। लोड बैलेंसिंग रूल कोई अटैच नहीं किया है, हेल्थ प्रोब कोई अटैच नहीं किया है। ओके, फ्रंट एंड आईपी आप यहाँ से देख सकते हो, और बाकी सारी चीजें जो वहां पर सेटिंग पेज पे मिल रही थी, सेम चीजें यू विल गेट इट हियर। बट विदाउट फ्रंट एंड आईपी यू कैन नॉट इवन क्रिएट इट। आपको एक तो एटलीस्ट वहां बनाना है, यू कैन ऐड मोर ऑफ देम हियर, but while creating load balancer you'll have to create one public IP because you have selected your external load balancer. Okay, now talking about backend pool. Backend pool में आप उन machines को add करोगे जो आपको इस पे चाहिए. So let's see. Okay guys, my bad, we can see only two machines. What happened here, this third machine which we created, this machine, the one which we created, it went to a different virtual network 547. Do you see the virtual network name 547 and the virtual network Arbaz VNet? These two machines are on Arbaz VNet. This machine is on Arbaz VNet 547. So I'll quickly delete this machine and create a new machine, and I'll make sure that this time I use the same network. And I'll have to wait till this gets deleted because we do not have sufficient cores. तो जब ये delete होगा तभी हम नया machine बना पाएंगे. So I'll go ahead here, select the same resource group. I'll give the name. Just to avoid confusion, to new machine I'm giving the number 4. 3 वाला हम वैसे ही जो है इसको delete कर रहे हैं, ठीक है? I'll make sure to keep it in East US. सबसे छोटा साइज ले लिया मैंने मशीन का. Sorry.
Are you getting it that what did we miss? So if you keep practicing, then only you will get all these things. अभी मैं खुद भी इतने दिन के बात कर रहा हूँ, so it happens कि आप ये सब मिस कर दोगे. तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे ना, it gives them the confidence कि हाँ आप लोगों ने काम किया है. I have been telling you कि वो same VNet में होना चाहिए, same VNet में होना चाहिए, and then I myself selected a different VNet. See, it should have been in this VNet, and I created a new VNet. जिसकी वजह से मशीन अलग VNet में चली गई, and we are not able to use the function of load balancing. So we learn one more thing कि अगर आप अलग VNet में रहते हो तो भी आप use नहीं कर सकते हो. I mean we already knew this, but make sure that you follow all this, and at least while giving an interview you mention all these things. थोड़ा सा confidence आता है interviewer को इससे. Okay, I'm creating a new machine. Waiting for the machine to be deployed, guys. I can do it with two machines, but both of them have the same website. तो आपको समझ में नहीं आएगा exactly कि आपका load balancing चल भी रहा है या नहीं चल रहा है. Okay, and this is just for the training purpose, guys, where I required a different website, ताकि आप लोगों को realize हो सके कि हाँ आपकी request एक बार इस server पे जा रही है, एक बार उस server पे जा रही है. Other than that, production में कोई भी नहीं चाहेगा कि दो तरह के different websites हो. प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो एम ही ये है कि सिमिलर सर्विसेज, सब कुछ सिमिलर चीजें जो है आपको वहां से मिलती रहे. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. Yeah. So this these load balancers cannot be nested also, right? ये वाला specific. यस यस, They can be nested and they cannot be nested. Because I'm दे trying कैन to बी. search, I'm not able to. They यस, can दे be. कैन बी ऑब्वियसली. Okay. करेंगे, हम उसको भी करके देखेंगे, नेस्टेड को भी करके देखेंगे. Okay, I've shared the new IP. You won't be able to access any website as of now immediately. I'll install the role first. So this is the machine. I've created a new machine.
From server manager we install IIS role. This you don't need to know, you don't do that. ये सारा काम application team का होता है, but because we are doing it, I can share the screen and let you know. Otherwise इसमें IIS install करना, उसके web pages, everything, OS level के issues जो है, it won't be your responsibility. Meanwhile, I'll also go ahead and turn off the firewall. वो एक issue होता है कई बार. Okay, it's still busy. Okay, guys, you have the IP address, right? I'll let you know when to check. I am adding that role. And meanwhile, I will also, okay, just give me a minute. I'm adding the role. It has started working. Okay, I'll let you know when to check. Let me know if that website is working. And meanwhile, I will start creating the load balancer. Hopefully, we should be able to see all three machines now. So we configured front end while creating the load balancer. Is it clear to all of you till now? One public IP was mandatory. Without that, you couldn't have gone next to the next level. Okay. Two I created just for the experiment. I'll show you some things. Backend pool, you could have done there. We can do it here. So we are doing it here. I'm adding the machines. Now I'm giving the name. So let's say that I give a name that Tsoft website. Arbaz, this VNet now I have selected. Under this VNet, how many machines are there? I have to see. Now if you see, we can see all three machines. Okay. I'm adding all these three machines. I hope you guys are getting it, right? This is what we are doing now. We're creating a backend pool here. We have already created a load balancer. उसका front end IP हमने ले लिया. अब backend हम चीजें उसमें जोड़ रहे हैं. So these are three machines. I clicked on add. Save. So two things have been established now. One is the public IP of my front end pool. There are two IPs. Okay. Now, as of now, we have two IPs. Another one is my backend pool. Do you think this is sufficient? We should be able to access the application now. Yes, guys. Do you think it is sufficient? Sorry, didn't get the question, sir. We have added the front end IP. We have added the backend pool. Do you think it is sufficient now to access the load balancer? Not the technical question. Logically, I'm asking. Do you think कुछ और pending है? ऐसा लग रहा है या this should be enough? Should be enough. It should be enough. No, it's not. And Where is the communication between them? हमने कहीं पर describe ही नहीं किया ना अब तक कि communication कहाँ पर है. इसीलिए दो IPs है. अगर वो अपने आप में इनफ होता तो दो में से किस IP को आप किसको दोगे? हमने बैकएंड में कोई अभी तक कंजक्शन किया ही नहीं है दोनों चीजों का. बाय द वे द थर्ड सर्वर इज अप और उसका वेबसाइट भी चल रहा है. ओके, सो आई एडेड बैकएंड. नाउ आई एम एडिंग द हेल्थ प्रोब. हेल्थ प्रोब इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि हेल्थ प्रोब ये है आपका कि क्या चेक किया जाएगा इन सर्वर्स में. सो आई एम सेइंग HTTP is my health probe where port 80, they should always check port 80. They should always check port 80 उस सर्वर्स पे. तो ये आपका जो लोड बैलेंसर है ना, ये इन सर्वर्स का पोर्ट 80 हर 5 सेकंड्स में चेक करता रहेगा. आई कैन चेंज द टाइम हियर, द इंटरवल, दिस इज द सेकंड्स, 5 सेकंड्स. तो हर 5 सेकंड्स में जो है आपके इन सर्वर्स का वो पोर्ट 80 चेक करता होगा. सो जैसे ये सर्वर अगर डाउन होता है किसी रीजन से, इफ द सर्वर इज शट डाउन, तो इसका पोर्ट 80 भी डाउन होगा. तो नेक्स्ट कोई रिक्वेस्ट इस पे वो भेजेगा ही नहीं. रिमेनिंग सारी रिक्वेस्ट वो ये तीन मशीन में डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा. And even if the machine is on and for some reason HTTP services is down,
किसी भी रीजन से पोर्ट 80 ये नहीं है, या फिर नेटवर्क कार्ड चला गया, या इन दोनों के बीच में इंटरनेट कनेक्शन चला गया, for any reason if this load balancer is not able to reach to this machine using port 80, so this load balancer will send all other requests to the remaining machines and not to this machine. This is your health probe. यहाँ पर वो decide होता है. Is it clear, guys? Yeah. So now I'm adding the health probe. It is still not complete. अभी भी ये complete नहीं हुआ है. हमने बस क्या दिया उसको, एक public IP दिया, backend pool दिया और health probe. Did we still configure it somewhere कि ये तीनों का conjunction हमने कहीं पर किया ही नहीं. So that we will do. Still we have 2 more steps to go. Now guys, load balancing rule, that is the place where we combine all these steps or combine all these parameters which we have been discussing or which we have been configuring. So I can give any name. As of now, I'm just giving a random name, tsoft http. Now front-end IP, which front-end IP do you want? Do you see we have 2 options now? So here I'll select this front-end IP. Now I'm free to give this IP to my users. Now I know कि ये IP से binding हो रहा है. Otherwise 2 IP से मैं कौन सा वाला देने वाला था, right? 2 IP है, backend में servers है, but कोई उनका combination तो हमने बनाया ही नहीं. So here we are creating that using this front-end IP, backend pool. This is the backend pool I created जिसमें 3 servers है. Protocol, let it be. वेबसाइट चेक करने वाले हैं हम, तो पोर्ट 80. Now what is this port and this port? I'll explain it tomorrow. We don't have enough time today. इसको हम करके देखेंगे. That front में कोई और पोर्ट हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए इसमें जो है ना, now if this is going without any port, तो by default ब्राउजर का पोर्ट होता है 80. But if I want to access this website using port 50,000, so इस तरह से मुझको access करना पड़ता है. So this website I'm using, I'm accessing using port 50,000. So this we can configure here. कि if I want someone to use port 50,000 front end, मतलब इस तरह से अगर request आएगा ना, वेबसाइट का नाम :50,000, तभी ये काम करना चाहिए. I can do that, but we'll do that tomorrow. कल मैं इसको explain करता हूँ. Backend में port 80, health probe, हमने एक ही health probe बनाया है जिसमें हमने decide किया था कि अगर port 80 down होता है तो we'll have to check. Session persistent, इसको मैं कल explain करता हूँ. We do not have time. Idle timeout क्या है, इसको भी I'll do it. TCP reset, you don't need to know it. Floating IP, that's okay, you can ignore it. Add. I'll keep the setup for 1 or 2 hours, and I'll see if possible I'll shut down all machines and keep it for till tomorrow as well. Meanwhile, please go ahead and check. You don't have access on this resource group to edit something, but you have access to view. So at least go ahead and view. Okay, do that. So at least you will understand few things. आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर किया है, क्या-क्या चीजें उसमें की है, ये सब you will get it. Rest of the things we will see tomorrow. Okay, so now we have already got this. Now instead of those individual IPs, can you go ahead and access this one? All of you do, and let me know किसको क्या वेबसाइट दिख रहा है. This IP 52.170.23.69. See, when I access this, I hope you guys can see my screen, right?
So with this IP 52.170.23.69, I can see this website. Which website are you able to see? Let me know. Tsoft. Tsoft. Let me refresh it. Let me refresh again. IIS. So maybe if I refresh it for some time, I will also get Tsoft wala ek do baar mein. Now that depends. See, I've got Tsoft with the same IP. Are you guys getting it? So this is how a load balancer works. Now what the load balancer is doing, request को distribute कर रहा है वो यहाँ इस तरह से. Okay, I'm unable to reach. Actually, saying site unable to reach. Unable? You should be able to. It's just... Kumil, is that you? You're not able to. Yeah, the site can't be reached. Try it on your That phone. took too long. Okay. Try it on your phone. Okay, guys. So Yeah, why just did I tried. do this? Why did I do this? Why two websites? Just to show you guys that with the help of one IP, how the requests are distributing. Otherwise, production environment में no one would want के एक IP से multiple websites खुल रहा है. No one wants that. They always want कि एक ही तरह की वेबसाइट खुले, एक ही सर्विसेज मिलती रहे, सर्विस डाउन ना हो. मतलब एक सर्वर भी अगर डाउन है तो दूसरे से रिक्वेस्ट मिलते रहे. नाउ इफ यू वांट आई कैन शट डाउन दिस सर्वर, ये वाला जो है ना जिसपे IIS वाला है, लेट मी शट डाउन दैट सर्वर एंड देन यू गाइस कैन ट्राई रिफ्रेशिंग. उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है. You should not see this website now. Okay, I have shut down the server. अगर आप अब इसको रिफ्रेश करो ना, अब वो वाला वेबसाइट दिखेगा ही नहीं. Now you will only see Tsoft वाला. And if I turn on that server और ये दोनों को बंद कर दूं तो you'll see only that website. Which confirms कि आपका load balancer जो है request सिर्फ healthy servers पे ही send करता है. And this is only one method we checked. इसके आगे आप RDP का भी हम देखेंगे कल. I'll using these same 3 servers, I'll give you the IP, this IP, और आप तीनों भी अलग-अलग इस पे RDP का connection ले सकते हो. So that is how a load balancer works. Okay, now we do not have time for the questions, but guys, go ahead, check this once. I'm keeping the environment as it is for 2 hours and then maybe I'll delete it. And tomorrow we'll discuss further things in load balancer. Tomorrow, hopefully we'll finish the load balancer wala topic and we'll move ahead for application gateway or traffic manager or front door. Thank you, sir. Okay, thank you guys, bye. Bye.